So, good morning, all of you, and I thank you all for participating in this specialized session. Today's topic is nutrition. What does it mean? Uh, before 10 years, if you talk about cellular nutrition, तो लोग इसे समझ नहीं पाते थे। मैं खुद समझ नहीं रहा था, क्योंकि हमें खाना खाने की आदत है और खाने के बाद अगर कभी कभार सेहत खराब होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हम फार्मास्यूटिकल को बिलीव करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं और उसे नहीं खा लेते हैं। ये ऐसा जिंदगी चलता है हमारे साथ। पर आज के डेट में गवर्नर जोड़ दे, आज के डेट में एक अलग सा माहौल पैदा हो सकता है। लोग मेडिकेशन से जाने से पहले अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ चीज को हम वेलनेस कहते हैं। एक हेल्थ खराब हो उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद पर उससे पहले लोग आजकल थोड़े बहुत समझ में आ गया, क्योंकि अगर एक बार लोगों को कैंसर होता है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, एक्सपेंडिचर तो कोई लाखों में होता है। क्यों ना आज के मार्केटिंग, आजकल के बच्चे, आजकल के माहौल, आज ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी आ चुका है, एवरीबडी स्मार्ट हो गए हैं और लोगों को ये समझ में आ गया ऐसे साधन हम करेंगे ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स हम जाएंगे, हम वेलनेस पे फोकस करेंगे, जिसका नाम है दूसरे साइंस में अभी आएंगे, जिसको हम कहते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड है न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, the certain nutrition diet that are being medicinal or therapeutic value। तो इस चीज को लेके हम काफी फॉर्चुनेट हैं कि अभी मोदी केयर हमारा जो है, जो बुकलेट आप जानते हैं, हमारे पास जो प्रोटीन पाउडर से लेकर सारे चीज है उसके ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल लिखा गया है। आप लोग देखे होंगे न्यूट्रास्यूटिकल लिखा जाता है। मैं दिखा सकता हूँ पर मेरी स्क्रीन पे शायद ये विजिबल नहीं होगा, फिर भी न्यूट्रास्यूटिकल हर चीज पे लिखा गया है। तो हम काफी ये कोई दिनों से सोच रहे हैं सिर्फ डाइटिशियन क्यों, हम कुछ न्यूट्रास्यूटिकल पर एक स्पेशल सिस्टम करेंगे। तो लकीली आई गॉट ए स्टूडेंट, स्कॉलर ओवर जो इस चीज पे जिनका स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी इनका पर, तो उनके पापा मेरे साथ रिश्तेदार हैं सत्संग में और बहुत बड़े ऑफिसर हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो आज की जो स्पीकर हैं दीपाली महांती, वो वेलूर में अपने स्कॉलरशिप फीस में करते हैं मास्टर प्रोग्राम में। तो जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि दीपाली कैन यू जस्ट हेल्प मी, ये ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है, हम जानते थे उनकी मतलब एक्सपर्टीज डायरेक्शन में, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम जरूर बताना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लूंगा और मैं चाहूंगा लेट्स वेलकम मिस दीपाली महांती ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लेट हर शेयर हर स्क्रीन विद वन वे। हम उनसे जानेंगे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो चीज है क्या है, उनके पास क्या मेडिसिनल वैल्यू है। और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे प्रोडक्ट के साथ अगर आप थोड़ा जानकारी पाएंगे, तो हमने उनको भेजा था और उन्होंने इसको मतलब काम से दिया है। तो चलिए हम उन्हीं से सुनते हैं। मैं चाहता हूँ अपने आप को अनम्यूट करें एवरीवन, एंड पहले ताली पे आप दे दीजिए। मैं चाहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा आपको तो सबको मैंने थोड़ा अनम्यूट करने के लिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम आ जाएंगे दीपाली जी को। So let's give a very big hand for. Hello, am I audible? Elder. Absolutely, आप बिल्कुल audible। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष जी से वो सबको मतलब म्यूट कर दें। जब सेशन होगा, सेशन के बाद अगर जो क्वेश्चन हैं उसमें हम आएंगे, तो कृपया अपने माइक्रोफोन को
और अपने वीडियो को म्यूट करके सिर्फ दीपाली जी को अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो जैसा कंफर्टेबल है वैसे के साथ। थैंक यू सो मच। Okay. Okay. Now I'm going to share my screen. थैंक यू, थैंक यू। Hello. I'm unable to share the screen. I don't know why. हाँ, वही ना, मैं बता रहा हूँ उनको। नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे उसको? अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करूँगा, आप बताएंगे, मैं देख रहा हूँ। Okay. अब आप फिर से ट्राई करिए प्लीज इनको। Hello. हाँ हाँ, So वो कोई शेयर कर सकते हैं क्या? मेरा नहीं हो रहा है शेयर स्क्रीन। इफ यू वंस मोर ट्राई, हमने ऑप्शन दिया है आपको, वंस मोर जस्ट ट्राई करिए, नहीं तो हम करेंगे। But still my browser is not allowing to share the screen. Okay then, so okay, let me say, Hello. yes, yes, please wait, Hello. please give me just 1 minute time and let's set around. Hi, host. Just wait for हट में हम कर रहे हैं। Okay, okay. हमारे पास एम सुदीपा जी हैं, बहुत मतलब इसमें एक्सपर्टीज उनका बहुत अच्छा है, पर अभी मेरे साथ इस बड़ी को मैंने भेज दिया है। हेलो या भाई भाई गुड मॉर्निंग सुदीपा कହୁଛି भाई मैम को होस्ट कर दियंतु से शेयरिंग करि परिबे। हाँ, होस्ट करा है इसका, बट स्टिल वो मैम को होस्ट अछंती, मैम को होस्ट अछंती, अपने होस्ट कर दियंतु। हाथ चले से पुणी अलाउ करवा सुद्धा ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ହେଲା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ମାନସ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। नहीं ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରାଉଜର ଆଲାଉ କରୁନି, ଟ୍ରବୁଲ ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ମାନସ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟା କ୍ଲିୟର ହଉନି। नो इशू ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି, ହେଇଗଲାଣି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ହେଇଯିବ। which one need to check? अब स्क्रीन शेयर दूसरों का बंद करती है। Yes, it's coming. Just 1 minute. अपने आप को म्यूट कर दीजिए अदर्स। Yeah. Okay. Okay. Thank you so much हाँ हाँ हाँ, for sharing the screen.
Yeah, please. Okay, good afternoon to one and all present over here. Respected members of the Modicare team, all my elders, friends, and everyone present in this session. Myself, Ms. Homadipali Mohanty. I am pursuing my Masters in Biotechnology from Vellore Institute of Technology, that is VIT University. So today I am going to talk on the topic nutraceuticals. So before getting started with this topic, let me talk about the current scenario. As in this current scenario, we all are facing from the common problem, that is this pandemic situation due to COVID-19. So all must be aware of the fact that increasing immunity is the major fact to tackle this coronavirus in a better way. Uh, so hence everyone would be in search of how to increase immunity naturally so that we can prevent and treat ourselves from this coronavirus situation. So here in this situation only we can relate ourselves with the term that is nutraceutical. I think each one of us somehow, somewhere have gone or read the word nutraceutical either on some medicine wrappers or any of the nutritional drinks or foods, whatever we take in our daily basis. So here comes what are nutraceuticals. Nutraceuticals comes from two words that are hello. It's my kind request everyone to mute themselves. Okay. This nutraceutical comes from two terms, that is nutrition and pharmaceuticals. Everybody would be thinking that nutraceutical is very common word, that is nutrition or nutrients. I myself used to think this thing, but when I started studying about it, I came to know that nutraceuticals is something different. That is a combination of nutrition and pharmaceuticals. So what is nutrition? Nutrition is the process of taking in nutrients from the foods we eat. Nutrients are the substances that allow our body to make energy, build and maintain tissues, etc. And pharmaceutical is the medicinal drugs that we take whenever we face any disease or anything. As it is said that nutraceutical are the products that are thought to provide medical or health benefits beyond the diet but before the drugs. So what does this mean? This means along with the diet that we take in our regular basis, with that some extra health beneficiary factors and which helps in controlling us from taking the drugs and medicines. So it has nutraceuticals is a dietary supplement with some extra health beneficiary activity. Next slide, please. Hello. Yes, audible है. Okay, please continue. नहीं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थोड़ा चेंज कीजिएगा जो स्लाइड्स. या ओके. Here in my slide I entered one more slide, but here it is not there, so sorry for that. So I took one chart from the Modicare booklet, that is Arogya booklet. There is a chart on for that balanced diet. In that balanced diet, it represents about the whole categories that we can include in the balanced diet. We all know about balanced diet. It is categorized into 5 zones, that are red zone, orange and yellow zone, green, green zone, blue and purple zone, and white zone. These are the 5 categories that can be included in the balanced diet. So in the red zone, red apples, blood oranges, raspberries, tomatoes. These are some of the factors, some of the vegetables and fruits that comes under the red zone. And in yellow and orange
zone, it comes the oranges, pumpkins, papaya, all these vegetables and fruits. Then in a green zone, all green vegetables. In blue zone, the blueberries, blackberries, etc. And in white zone, the most common ingredient that we use to intake in our daily basis, that is the potatoes, ginger, etc. that comes under white zone. So in my upcoming slides, very precisely, I described about various fruits and vegetables that we consume in our daily basis, which consists of the nutraceuticals within them. Let's get started by having quick glance on various fruits and vegetables and the respective benefits. So first one is tart cherry. Tart cherries are a natural source of melatonin hormone that regulates sleep-wake cycle in a normal human being. The red color of the tart cherries are due to proanthocyanidins. Tart cherries increase the availability of tryptophan, precursor of serotonin synthesis. This juice inhibits the enzyme indole amine 2,3 dioxygenase that degrades tryptophan. So next slide, please. Okay. In animals, as I said, melatonin plays an important role in regulation of sleep-wake cycles. Melatonin was first reported as a potent antioxidant and free radical scavenger. So what does this antioxidant mean? Antioxidants are substances that protect the cell against free radicals, which play a role in heart disease, cancer, and other diseases. Um, and the next one is a free radical. What does this free radical means? Free radicals are molecules that are produced when our body breaks down food or when it's exposed to some tobacco smoke or radiation. So melatonin is categorized by the US Food and Drug Administration, FDA, as a dietary supplement. As I said before, nutraceuticals are nothing. These are the dietary supplements with extra health beneficiary activities. So it is just some of the terms दो से इंग्लिश में है, थोड़ा आप हिंदी या उड़िया में थोड़ा बताएंगे तो हमें और कंफर्टेबल हो जाए. कुछ लोग हैं जो बाहर से okay. तो सर्टन चीज जहाँ पे आप कंफर्टेबल है उसको उड़िया में बता सकते हैं. ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाएगा. अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पे मेलाटोनिन के ऊपर बोल रही हूँ. तो दैट मीन्स मेलाटोनिन इज अ नॉर्मल हार्मोन जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के में प्रोड्यूस होता है. So it is an endocrine. We have exocrine and endocrine glands in our body. So वहाँ पे endocrine glands के अंदर से various hormones are produced. So among them, melatonin is one of the most important hormone. जो कि हमारे स्लीप वेक साइकिल, दैट इज हमारे वो नॉर्मल लाइफस्टाइल, जो सोने का वो जो तरीका, लाइक क्या ड्यूरेशन के, वो सब पे हेल्प करता है. सो एंड मेलाटोनिन इज पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट में बोली तो एंटीऑक्सीडेंट इसका नॉर्मल ओडिया और हिंदी टर्म तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश. सो ओके. सो यहाँ पे हम कोरोना वायरस सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू ट्रीट कोविड-19. हमें पता है कोविड-19 सिचुएशन वी कैन टैकल, हम इसको फेस कर सकते हैं बाय नेचुरली इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी, आवर इम्यून सिस्टम पावर. ओके. सो बहुत सारे रिसर्च से ये पता चल रहा है, बहुत स्टडीज से, कि एक ग्रुप लेड बाय डॉक्टर राफेल आर कैस्टिलो इन Manila Doctors Hospital, that is वो जहाँ that is situated in Philippines, वो सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं कोविड-19 को बाय ट्रीटिंग पीपल विथ मेलाटोनिन, हाई डोजेस ऑफ मेलाटोनिन. सो यहाँ पे वी कैन कंक्लूड द फैक्ट दैट melatonin is very much needful and helpful in treating and preventing COVID-19. Next slide, please. Okay, the next slide is about apple. It is the most common fruit that everybody used to take in the regular basis or whatever. बचपन से हमें quotation सुन के आते थे कि an apple a day
keeps the doctor away. This is really true fact. Apple consists of various nutrition and health related factors. That's why we should consume apple in our daily basis. Apple consists of nutraceuticals, that are polyphenols, which are chlorogenic acid. As in my slide, I have written everything in a very concise way. These are chlorogenic acid, procyanidin B2, epicatechin, hydroxy, cinnamonic acids, flavonols, anthocyanins, etc. And steel beans is also another nutraceutical that is present in golden delicious apples. These are other form of apples that are present, not, I don't think it is present in Orissa, but it can be available in some other states and other countries. Okay, so यहाँ पे एप्पल के जो पील होता है, जो छिलके के ऊपर ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वी कैन फाइंड in the peel of the apple, rather than the flesh. Flesh is the body of the apple. उससे ज्यादा peel is more beneficiary for our health. It helps in blood platelet aggregation, as platelet helps in treating, inhibiting and preventing us from the blood coagulation factor. So apple help करता है इस पे, like human blood aggregation में. It inhibits human blood aggregation. Okay, then it also improves insulin sensitivity by lowering blood sugar. That means ये बहुत helpful है diabetic patient के लिए. Now, so the diabetic patient should take normally apple in a regular basis. That's what I suggest, because it is helpful in insulin sensitivity, as it lowers the blood sugar. Next slide, please. एक्चुअली आज तक हमें पता था एप्पल मत खाइएगा, उसमें शुगर बढ़ जाता है पर अभी पता चला तो हेल्पफुल नहीं है. ओके, प्लीज. Okay, then the next one is pineapple. Pineapple तो बहुत फेवरेट होगा एवरी इंडिविजुअल्स का, लाइक एवरी बच्चों, बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बात की हूँ जिनका पाइनएप्पल इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट, दे यूज्ड टू से. सो इन पाइनएप्पल पे हमारा क्या हेल्थ बेनिफिशियरी फैक्टर्स रहता है, वी शुड लर्न अबाउट दैट. सो इन पाइनएप्पल ब्रोमेलिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट nutraceutical that is present. Also vitamin C and carotenoids are also present in pineapple. So the main function of pineapple is it is anti-diabetic, it is antioxidant and anti-hyperlipidemic. It helps in faster wound healing. अगर किसी का कुछ like hurt हो जाता है, like कुछ भी क्या बोलूं, like इंजरीज हो जाता है, तो फिर उसके wound healing में पाइनएप्पल बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है. It is the one of the factor which is capable of reducing inflammation. As हमें पता है आर्थराइटिस पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके नी जॉइंट्स में, बोन जॉइंट्स में. सो पाइनएप्पल कैन बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग दोज इन्फ्लेमेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. So it is also helpful in as I told that it is helpful in wound healing. So agar any tissue in our body, any cell that are present in our body, वो like वहाँ पे blood supply जल्दी नहीं हो पाता है, तो pineapple can be naturally a factor of fruit that can be helpful. If we regularly take pineapple, we can prevent those things, like in that cells and tissues there would be adequate blood supply. So next slide, please. Yeah, it is also helpful in blood coagulation, as I said in apple. Pineapple and apple have many similar characteristics. And pineapple is also helpful in the removal of damaged tissue. कोई भी damaged tissue हमारे body पे होता है, तो pineapple would be helpful in those things. Okay, so it is helpful in delivering blood to the capillaries and the tissues that are inadequate with the blood supply. So basically, what is the main purpose of taking pineapple?
या उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है तो वो ले लेंगे. That's not the thing. We should also learn about the factors that we can that can be helpful. So it causes a healing effect mainly. ये हमारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट जो है इसमें ये Yes, yes. मैं आपको भेजा था, ये उस पे Yeah, I have seen the वो जो मोदी केयर के आरोग्य बुकलेट पे मैं दिखी थी, मल्टीविटामिन टैबलेट्स एंड प्रोटीन ड्रिंक्स, उसमें रहता है ये सब फैक्टर्स है, मैं दिखी हूँ एंड इट इज वेरी हेल्पफुल. मैं खिलाफ करना चाहूंगा और एक चीज सबको बताना चाहूंगा, ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होना, अगर ये खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरे बार लिंक उसमें डाल देंगे तो आप सब फिर से ज्वाइन कर जाएगा. तो आई रिक्वेस्ट दीपाली तो आप कंटिन्यू करें, इस मीटिंग में अगर कट भी होता है फिर से हम जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हम खत्म कर पाएंगे. थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू. Okay, next slide please. Next one is plum. तो प्लम में क्या रहता है, एमिग्डालिन इज द न्यूट्रास्यूटिकल दैट इज प्रेजेंट इन प्लम. सो प्लम इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द कैंसर पेशेंट्स. जो लोग कैंसर डिजीज से पीड़ित हैं वो लोग प्लम दे कैन इनटेक प्लम सो दैट वो एमिग्डालिन जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रेजेंट रहता है it can be helpful in treating and preventing cancer disorders. So next slide please. Yeah, next one is lemon. ये तो बहुत ज़्यादा common है. Every day we used to take, I think. So everybody know about lemon. Lemon का बहुत सारे like health related what benefits है उसमें. Starting from it is vitamin C is present in lemon, and some of the nutraceutical terms I will want to say, the chemical compounds that are present in the natural lemon are geraniol, linalool, citral, hesperidin. Hesperidin is the most important nutraceutical that is present in lemon, which is helpful in for the patients of asthma and arthritis. It is also a blood and body purifier. It is a rich source of vitamin C, so it increases resistance to cold or fever. It is antiseptic. So लेमन का अगर हम बताएं तो जितना भी बताएं वो कम है. लेमन का बहुत सारे हेल्थ बेनिफिशियरी एक्टिविटीज है एंड आई थिंक एवरीबडी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. मैं सुना था कोरोना के टाइम में चाइनीज लोग गर्म पानी के साथ लेमन जूस सुबह सुबह पीते थे. Yes, yes. Yeah, it is very much helpful. Yeah, excellent. Okay, next slide, please. Okay, next slide. I am quickly telling all the slides because or else it will take much time. Yeah. आप दूसरे बार जाएंगे, please. Okay. The next one is guava. Guava consists of ascorbic acid, myricetin, quercetin. These are the nutraceutical terms that are nutraceuticals that are present in guava. Guava has antibacterial activity that can be helpful against diarrhea causing organisms. So जिनका diarrhea वगैरह होता है तो like they can take apple, not only the fruit of apple. They can also grind or can directly take the leaves of the guava. It is very much helpful. So daily consumption of guava products, including the newly popular guava tea, may be beneficial for preventing complication in diabetic patients. I think diabetic patients, when they consult any doctor used to suggest them to take guava and guava leaves, as it is very much helpful in reducing the diabetic activity, as it consists of laxative. It is laxative. It consists of ascorbic acid. So as it consists of ascorbic acid, so it should contain vitamin C. So vitamins are present in every fruits and every vegetables, but here I am going to talk about only few of them because there is lack of time, so I can't say much. So that's it. Next slide, please. जो चॉकलेट है उसमें गुआवा फ्लेवर का है, तो Yes. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, तो हम खाते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट. तो हम
चॉकलेट्स वगैरह तो नेचुरली नहीं रहता है, वी शुड टेक नेचुरली, दैट्स इट, बिकॉज नेचुरली वी कैन, और ये तो नेक्स्ट वन, इसको का हम लाइव कर रहे हैं फेसबुक में, और ये जो चैनल में जाना चाहेंगे वो NS डिजिटल को सब्सक्राइब करके इससे ज्यादा जान सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही हमारा चैनल है। The next one is cherry. It also consists of vitamin C, carotenoids. Cherry is helpful in decreasing inflammation. जैसे कि मैं बताई कि arthritis पेशेंट्स में, बोन्स में या फिर एनी जॉइंट्स में उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लाइक बोलते हैं ना वाटर जम जाता है और वट एवर, सो उसमें इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग दोज इफेक्ट्स एंड इट रिड्यूसेस फोम सेल फॉर्मेशन, जो कि lowers the risk of atherosclerosis. What does this atherosclerosis means? It is a cardiovascular disease, and that is जहाँ पे हमारे जो blood vessels present रहता है हमारे body पे वो ज्यादा constrict हो जाते हैं atherosclerosis में, तो वो decrease कर लेता है cherries. Okay, next slide. नेक्स्ट वन इज ग्रेप्स. जैसे कि मैं बताई, आरोग्य बुकलेट में एक बैलेंस डाइट वाला चार्ट है जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है 5 जोन्स. In those, one zone is I told about red zones and orange zones previously. And though pineapple comes under orange zone and apple comes under red zone, and this grapes comes under either blue zone or green zone. Okay, if black grapes are of two varieties, that is, one is green grapes and another one is black grapes. Those black grapes comes under blue zone and green grapes comes under green zone. So the nutraceutical that is present in grapes is proanthocyanidins. These are the condensed tannins. So it is in grapes, mainly the main nutraceutical that is present in grapes is resveratrol. Resveratrol has various beneficiary activities, like it is helpful in Alzheimer's disease. It is helpful in treating cancer. It is helpful in treating various cardiovascular diseases, like I told about atherosclerosis, and those and other strokes. That heart strokes, usually these days people are facing those strokes and all. So grapes is very much helpful in those things. Next slide, please. Yeah, this about resveratrol, I told that it is present in grapes. Red wine, जो mainly Japan and other countries में red wine, I don't know about India, but in Japan and other countries red wine को बहुत prefer करते हैं because to treat some of the diseases. Red wine is also helpful in most of the diseases, but when it is prepared naturally, not like that manufacturing properties from products from the industries and all. Okay, the next one is blueberry. Blueberry comes under the blue zone of the valence diet. In blueberry, mainly consists of flavonoids, hydroxycinnamonic acids. These are the nutraceuticals that are present in blueberry. Anthocyanins and proanthocyanidins are also the nutraceuticals. It helps in protecting inflammation, improves cognitive functions, that is, it reduces obesity. आजकल तो ओबेसिटी, फैट हो जाते हैं लोग, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के सोसाइटी में. सो ब्लूबेरी कैन बी हेल्पफुल इन दोज डाइटरी purposes. So next one is strawberry. Strawberry also consists of vitamin C. In it, it consists of manganese. It is helpful in calorie, in reducing calorie, as calorie intake is the most important factor that we should look in every food that we used to take. That सारे जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स हम खाते हैं, स्नैक्स वगैरह व्हाटएवर, उसमें एक रहता है ना कॉलम जहाँ पे कैलोरी कितना %, फैट कितना %. इन दोस कैलोरी कितना रहता है, कैलोरी रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है, तो बहुत अच्छी बात है. ज्यादा कैलोरी होने से ज्यादा ओबेसिटी बढ़ता है. So this is a thing. Okay, next slide please. So it helps in calorie reduction effect.
and the next one is mango. समर सीजन आता है तो सभी का मेन इंटेंशन रहता है मैंगो, एंड इट्स माय ओन परसेप्शन दैट मैंगो, आई लव समर सीजन बिकॉज ऑफ मैंगो, इट्स माय फेवरेट फूड. सो आई थिंक सभी का, बहुत लोगों का ये होगा ही फेवरेट फूड. सो इट कंसिस्ट ऑफ गैलिक एसिड, मैंजिफेरिन, इट इज रिच इन आयरन. जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, एनीमिया जिनका होता है, तो आज मैंगो कंसिस्ट ऑफ आयरन. So it helps in curing anemia. It increases appetite and digestion. जिनका digesting relative problems होता है, so mango is very much helpful in it. It consists of vitamin B6, which helps in brain function. It has anti-tumor. Hello. हाँ, थैंक यू सो वेरी मच दीपाली. एक्चुअली ये मेरी 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म होने जा रहा है. मैं चाहूंगा ये हम एक दूसरा टाइम लेंगे, क्योंकि आज हमारे ओके नो प्रॉब्लम. तो हम उसके जैसे आज आप खुद स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई, तो मेरे को जो स्लाइड मिला तो मैंने कर दिया, पर आपने मोदी केयर के आरोग्य बुकलेट के जोन वाइज किया है. तो मैं चाहूंगा दूसरे बार आप उस जोन में आइए और इंडिविजुअल जोन में हम बात करेंगे. ये जो मेडिकल टर्म्स है उसको भी सुनना चाहेंगे आपसे. तो फाइनली मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, एंड स्पेशली टू यू. थैंक यू. और मैं इस ये चैनल तो है स्पेशलाइज ओएनएस डिजिटल कर दिया गया है,